Hi, hello dear children. How are you? I hope you all are very fine and enjoying your studies, enjoying your classes, isn't it? Children, I am your teacher Safina and I welcome you all in my English class. Children, घर में आप तो जरूर कुछ ना कुछ बदमाशियां करते होंगे, है ना? Isn't it? आप जरूर कुछ ना कुछ बदमाशियां करते हैं और जब आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हैं कि ये काम किसने किया, तो क्या आप बोलते हैं? आप क्या बताते हैं ये बदमाशी आपने किया है? नहीं, तब आप क्या कहते हैं? पता नहीं, किसी ने किया होगा, है ना? मैंने तो नहीं किया, ऐसा आप कहते हैं. Yes, I know children, you all do some or other mischiefs in your house, and whenever your parents ask you about that, you will just tell I don't know. ऐसे बोलते हैं ना, I don't know, somebody has done. किसी ने किया होगा. Yes, I know children, you will answer like this. So today's lesson is about that only, somebody or nobody. Yes, children, we are going to learn a poem that is from your English NCERT Marigold Book 2 Unit 6, and the name of the poem is Mr. Nobody. Mr. Nobody. So let's see who is Mr. Nobody. Let's start the poem. Children, today's poem is Mr. Nobody. I know a funny little man as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. I know a funny little man as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो बच्चों, ये है पोअम मिस्टर नोबडी. इसमें क्या बताया गया है? I know a funny little man. मैं एक funny little man को जानता हूँ. The poet is telling I know a funny little man. मैं एक funny यानी कि एक मजाकिया, एक हंसमुख आदमी को जानता हूँ. He is very little man. बहुत ही छोटा सा man है. As quiet as a mouse. माउस का मतलब क्या है बच्चों? चूहिया घर में कैसे अपना काम करती है? जब सब आसपास होते हैं तो चूहिया जो है कहीं ना कहीं छुपी होती है. जब रात को सब सो जाते हैं या घर से सब कहीं चले जाते हैं, तब वो माउस धीरे से अपनी जगह से निकलती है और घर के कई चीजों को काट कर चली जाती है. अपना काम चुपचाप कर कर चली जाती है. वैसे ही I know a funny little man as quiet as a mouse. वो भी एक माउस की जैसा है जो चुपचाप रहती है और चुपचाप अपना काम करके चली जाती है. Who does the mischief? वो क्या करती है? Mischief. What is meant by mischief, children? Mischief का मतलब है बदमाशी. आप जैसे बदमाशी करते हो चुपचाप से, किसी का पेन तोड़ दिया और चुपचाप रख दिया. जब किसी ने पूछा आपसे, जब मम्मी ने पूछा ये पेन किसने तोड़ा है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, किसी ने तोड़ा होगा, कोई आकर तोड़कर चला गया होगा, है ना? Like that, who does the mischief that is done in everybody's house. सबके घर में ऐसी बदमाशियां होती है. There is no one ever. किसी ने आज तक seen his face. No one ever. किसी ने आज तक उसका फेस नहीं देखा है. And yet we all agree. फिर भी हम सब मानते हैं, हम सभी इसी बात से सहमत हैं कि that every plate, कि हर एक प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं ना, इसे प्लेट कहते हैं. What is plate? Plate is a utensil in which we eat food. That every plate we break was.
टूटे हैं। It was cracked by Mr. Nobody. हमसे पहले जो मिस्टर नोबडी थे वो उसमें क्रैक लगा के चले गए थे, उसके बाद ही तो वो प्लेट हमसे टूटा था, है ना? Now we will recite the poem once again, children. You will also repeat after me. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever seen his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. So children, let's see what are the new words given in this poem. See, these are the new words. New words. Quiet. What do you mean by quiet? Quiet का मतलब क्या है? टीचर कहती है ना क्लास में, be quiet. चुपचाप बैठो. Quiet. Then mischief. Mischief मतलब मैंने कहा ना, what is mischief? बदमाशियाँ. देखिए, you can see in this picture how this child is doing mischief. कैसे बदमाशी करती है? When her father is asleep. जब उसके फादर बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं, how she is doing mischiefs. कैसे बदमाशी कर रही है वो? This is called mischief. Now everybody. Everybody के मतलब सभी लोग. You can see many people here. Everybody is wearing colorful dresses. ये सभी लोग colorful dress पहने हुए हैं. Now agree. Agree का मतलब क्या है? सहमति, मानना या सहमत होना. Now nobody मतलब nobody, कोई नहीं. Plate. You can see plate. This is plate. Then face. Face. चेहरा. This is my face. Now cracked. Cracked का मतलब क्या है? See, you can see how this plate is cracked. इसमें कैसे दरारें पड़ी हुई है, दरार. Cracked means दरारें पड़ना. Then mouse. You can see this is mouse. Now children, we will see what are the exercises given in this lesson, in this poem. Now reading is fun. These are the questions. You have to answer these questions. Now first question is, who is Mr. Nobody? Nobody कौन है? The first line of the poem you have read, I know a funny little man. So that means Mr. Nobody is a funny little man. So you will write the answer. Mr. Nobody is a funny little man. Answer is Mr. Nobody is a funny little man. Now question number 2. Has anyone ever seen him? क्या Mr. Nobody को किसी ने देखा है कभी? Answer is no. No one has ever seen him. किसी ने भी कभी उसे नहीं देखा है. Next question is there a Mr. Nobody in your house? क्या आपके घर में कोई Mr. Nobody है? If yes, you can write yes. If no, you can write no. Like I am writing, in my house there is no Mr. Nobody. So I am writing the answer. No, there is no Mr. Nobody in my house. मेरे घर में तो कोई मिस्टर नोबडी नहीं है. तो चिल्ड्रन, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. हियर लेट्स टॉक. लेट्स डिस्कस समथिंग. हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने कुछ नॉटी अपने घर में किया है? ये तो जरूर किया होगा, है ना? सभी बच्चे कुछ ना कुछ बदमाशी अपने घर में करते ही हैं, है ना? What did you do? अब आप बताइए आपने क्या किया? जैसे हमने पिक्चर में देखा, one girl is putting all the lipsticks and putting some designs on her father's face when he is asleep. जब उसके फादर सो रहे हैं तो
लिपस्टिक लेकर अपने फादर के मुंह में पूरा लगा रही है। दैट इज ऑल्सो वन मिस्चीफ। तो आपने क्या मिस्चीफ किया अपना घर में? क्या प्लेट तोड़े हैं या किसी अपने दीदी या भैया के किताब को फाड़ दिए हैं आपने कभी, या कुछ और बदमाशी की है? यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। What did you say? उसके बाद आपने क्या किया? जब आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा उसके बारे में तो आपने क्या बताया अपने पेरेंट्स को? You can discuss with your friends. Now children, this is our next exercise. Let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. कभी-कभी आप कुछ चीजें अपने लिए ढूंढना चाहते हैं, है ना? Take those that you did. उसके लिए आप क्या किए? Tell your friends और अपने फ्रेंड्स को बताइए। I tried to see why the clock ticked. जैसे कि घड़ी में देख के आपने कभी सोचा होगा कि ये क्यों टिक टिक कर रहा है, घड़ी क्यों टिक टिक कर रहा है? Why the clock is doing this sound टिक टिक? ऐसे क्यों कर रहा है? और next is I went out of the house at night to see the stars. और आप क्या करें, कभी आपने शायद कभी किया होगा, बाहर जाके स्टार्स को देखा होगा, है ना? बाहर जाके स्टार्स को आपने सोचा कि चलो मैं स्टार्स को देखता हूँ, तो आपने क्या किया होगा? घर से बाहर गए और आसमान में स्टार्स को देखने लगे। I climbed a tree to look into a nest. कभी कभी शायद आपने ऐसे भी किया होगा कि आपको चिड़िया का घोंसला देखना था, तो आपने क्या किया? सीधे पेड़ पर चढ़ गए एंड यू लुक्ड फॉर अ नेस्ट। अगर आपने ऐसे किया है तो यू विल पुट हियर अ टिक मार्क। यू विल पुट अ टिक मार्क हियर। You will put a tick mark like this. Next, I climbed on a stool to find biscuits. ये तो आप सभी ने किया होगा। जब आपको भूख लगी, बिस्किट नहीं दिखाई दे रहे थे, तो you took a stool and climbed it. अलमारी के ऊपर से आपने बिस्किट के डब्बा उठाया होगा, है ना? If you have done like this, you will put a tick mark here. Okay? And if you have thought sometimes like this, then also you can put a tick mark. अगर आपने here अगर आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि क्यों ये घड़ी टिक टिक कर रही है, if you have thought like this any time, then you can put a tick mark here. Now children, we will go to the next exercise. Say aloud. Say aloud and circle the rhyming words. First of all, you have to read the sentence aloud. Then you have to find out the rhyming words and circle it. A mouse ran into the house. A mouse ran into the house. So, what are the rhyming words? Mouse and house. Mouse, house. Next is, I can see the little bee. I can see the little bee. So, what are the rhyming words here? See and bee. Next is, that was a fat cat. That was a fat cat. So, rhyming words are fat and cat. Next is, give me a handkerchief. Don't do any mischief. Give me a handkerchief. Don't do any mischief. ये तो देखते ही आपको पता चल जाता है बच्चों की rhyming words are handkerchief and mischief. Mouse, house, sea, bee, fat cat, handkerchief and mischief. Now children, let's go to the next exercise. Let's write. Fill in the blanks with A, E, I, O, U. Children, I have told you before also, A, E, I, O, U are called vowels. So you have to fill up the blanks using these vowels. H, E, dash, D. What will you fill here? You will fill A. You have to write A here. H-E-A-D, head. Here, A. A-R-M-S, arms. L-E-G-S. L-E-G-S, legs. D-R-E-S-S, dress. Then H-O-U-R, R. H-O-U-R, R. Children, I am
all these words once again. Head, arms, legs, dress, arm. Okay. Now next is add no and some and every to the word buddy to make new words. Children, you have to add no, otherwise some, or otherwise every to all these buddy. All these words, buddy, body, body is written here. You have to add, या तो no add करना है, या तो some add करना है, या तो आपको every add करना है. So you will write like this. Here you can add no, it will become nobody. Here you can add some, some, then it will become somebody. Then here you can add every, every, every. Then it will become everybody. Nobody, somebody and everybody. Now dear children, let's go to the next exercise. Now dear kids, let's recite this poem given in your book. ये जो poem आपके बुक में दिया है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी रिसाइट कर लेते हैं. The zigzag boy. I know a zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot. You will know where things are put away. Again, I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. Now children, what is written here? You can see. Can you make zigzag lines? क्या आप zigzag lines बना सकते हैं? Do you know what is zigzag? Zigzag मतलब क्या है? Zigzag, इधर उधर. See how the zigzag boy runs. आपको zigzag क्या है? अगर पता करना है तो you can see how this boy is running in a zigzag way. So you can make zigzag line like this. See children. Zigzag, zigzag. This is called zigzag lines. Now dear kids, this is the exercise given in your book, page number 95. Let's practice. I request all of you that you should always write, or you should always practice this page, the cursive writing page given in your book, so that you can improve your writings. So children, here we come to the end of this session. I hope you all have understood the poem very well. I want that you should all repeat this poem again and again at your home. Repeat the new words, repeat the rhyming words and study well. So children, we will meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.